Hello and welcome to our next lecture on Nepheloturbidometry. Myself Professor Andy Pupate. So we start with our lecture. Before starting with our next lecture, we will discuss in short about what we have studied in the case of Nepheloturbidometry 1, because in this chapter we are studying about the nephelometry as well as turbidometry, and we discuss on the introductory part as well as the principal part. So just be remember that nephelometry is dependent on the scattering phenomena, whereas turbidometry is dependent on the transmission of the radiation. So whatever the in the case of nephelometry, IS intensity of scattering is directly proportional to the concentration, while in the case of transmission, means in the case of turbidometry where the transmission takes place, where intensity of transmission is inversely proportional to the concentration. So simply we can say that uh, that if scattering is more when there is a more amount of the concentration, whereas transmission is more when there is a less amount of the concentrations. So that is the in short about means so in the case of principle, we know that we have to take that suspended particle dissolved in particular solutions. Okay, so we make it a suspension, and through this suspension we pass the radiation, and when we want the study the scatterings, we measure the scattering at an angle of 90 degree. Okay, while if you want to be study the turbidometry, so in the case of turbidometry we measure the radiation at an angle of 180 degree. So that is an big difference, I must say, because they both works opposite, but the main role is the same. Okay, so what is the main role? To identify the concentration of the analytes in different means solution, water, sewage water. We have to think over it in a detail about the applications, which is a very vital part. Uh, so then we think about the what are the factors are there, which is not given in your syllabus, not mentioned in your syllabus. We added some short, like various factors are there: solution, wavelength, the type of solution, the particle size, and so we must require a uniform particle size, and even the temperature, viscosity also the affects. Okay, so we discuss on that part. Then we move towards the further, like the instrumentation of that nephelometry and turbidometry. So it is as it is same like UV spectroscopy, as I told to you. We already discussed the UV spectroscopy, then we studied the nephelometry one. So now we are not wasting that much time for the instrumentation, because here is an radiation source where in that case there is a different types of, mostly the tungsten जो है tungsten, and that all types of radiation source are there, mostly two types of radiation source that we have studied in the case of this one. Then the entrance slit, exit slit, collimator 1, collimator 2, into that one there is an prism and grating. So we already studied that one. Then the different types of prisms, gratings, so we cover with that point. We have to note the formulas and all things. Then when there is a role of prism and grating is next, there is a filter. So we must know about the absorption and the interference filter. Absorption is the contractory we are using. The what is the color of the solution? Exactly opposite the kind of the contractory or opposite type of filter we are choosing. So that filter allowed to pass that color solution only, and remaining it get stop over there or absorb that unwanted radiations. Then what are the interference filter that we have studied? So in the case of this interference filter, we know that there is an SiO membrane over there, silver, or that into that one SiO is mixture of that one, where that semi-reflective, semi-transparent material is there,
and then there is an radiation is get passed and we get the monochromatic beam of radiations. Okay, so dispersion is less than the interference absorption filter. So we study onto that part, we cover with that whole things. Then we move toward the detectors. So actually the detectors are same that we have studied in the case of UV spectroscopy. Still again I am revising, because the same thing we are studied in the case of the chapter, that is the atomic emission as well as atomic absorption spectroscopy. So where also we are studying the same detectors. That's why I am again today will just small revise that kind of the detector. So before going further, so in today's lecture we are discussing about the whatever the detectors are there and applications, which is very important. So we before going toward that one, we start with the objective. So in the case of objective, to understand the various detectors used in the case of nephelometry and turbidometry, then to study applications of nepheloturbidometry. So in the case of this one, so both are showing the same applications. So we have to study about that concept. So we start with the whatever the detectors. So detector, in the case of this one, light source we have studied mercury arc, tungsten lamp, halogen, simple bulb, we can say polychromatic radiation हमें देता था, ठीक है. Then there is an monochromatic prism and grating, we have studied the into that there is an filter, absorption interference filters, then sample compartment, that is a cuvette. So cuvette is an cylindrical type of shape, mostly made up of glass. Okay, so all things are there, and we are using tungsten halogen lamp, which is a bulb type of radiation that we are provided. So in the case of detectors, when we study about the nephelometry, we use the photomultiplier detector, and when we study the turbidometry, we are using the barrier layer cell and photocell. Well, same atomic emission spectroscopy, all three detectors we are using. We are not repeating that point again and again now. So in the when we study about atomic emission spectroscopy, directly shift that point of the detector. So and even in the case of atomic absorption spectroscopy, there is a photomultiplier detector. We also overcome, means we neglect that 1.2. Okay, again just focus on this one, because we are repeating so many times the same concept, that is the photomultiplier tube, where the name itself indicated there is a multiplication takes place in this tube. So it is simply, it is an quite sensitive, detect the smaller signals, okay, or we can say detect the extremely weak signals. But the precaution that we have to be measure is that we have to protect it from the stray lights. आउटसाइड से जो लाइट आ रहा है उससे हमें इसको प्रोटेक्शन करना है. Okay, then the constructions, as we know, it is having one anode, sorry, one photocathode and 10 different anodes. So into that photocathodes the radiation is get fall, and potential we are applying throughout is 75 to 100 volts. हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, we are applying a potential of 75 to 100 volts. Okay, and whatever the tubes are there, that is made up of glass or sometimes quartz. So from that one the tubes are made. Then simplest working is there. So incoming beam of radiation, which are the beams that fall onto the sample holding systems. So in the case of this one, they causes absorption होके immediately scattering देने लगते हैं, and even if they gives the scattering, such a scattering radiation which is an excess energy radiations are there, that radiation fall onto photocathode. और क्या होते हैं, photocathode पे fall होते हैं. If you able to see in this diagram, here is an photocathode on which the radiation is get fall. From photocathode it reaches to the focusing electrode
from which it reaches to the anode. As we know, anodes are, or the anode where there is a multiplication takes place. Simplest, we know that it works on the principle of multiplication. ओके, सो यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन होता है by secondary emission of electrons. If you are able to see, here is an one, it reaches towards the another anode. From this one there is a multiplication from 2 to 4, 4 to 60, 60 to 64, from 64 to 56, or like this one, there is a continuous multiplication takes place. इसके अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जो है कंटिन्यूसली होते रहता है. सो सिंपलेस्ट है कि फोटो का पे रेडिएशन फॉल होगा, फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स द एनोड. जैसे एक्सेलरेशन होगा तो फ्रॉम वन एनोड टू अनदर एनोड के इसमें क्या हो जाएगा, emission of the electron takes place, or we can say simply there is an multiplication of electron takes place. So that electron 4 to 5 हम मेजर कब तक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कब तक होगा, टिल इट रीच टू द 10 एनोड्स एंड द व्हाट रिजल्ट्स आर देयर, दैट कम्स फ्रॉम 10 रेज टू और फैक्टर 4 to 5 or 10 raised to 6 factor. So several electrons liberated by each original electrons, and whatever the final emission is there, that continue till that factors 10 raised to 6, and that is considered is our final reading. So this one is the photo multiplier tube, also called as the photo multiplier detector. So this one is the nephelometry detector. Then we start towards the next detector for the turbidometry. So in the case of turbidometry, there is a first detector, that is barrier layer cell, also called as the photovoltaic cell. Okay, so for construction, generally for visible region consist of photocathode. So simplest one in this diagram, if you are able to see, here is an photocathode is there, here is an anode, and into this one there is a selenium layer is there. Okay, so the simplest है कि फोटोकैथोड और एनोड के बीच में क्या किया गया है, इसको सैंडविच किया गया है. किसको सैंडविच किया गया है, सेलेनियम लेयर को उसके अंदर सैंडविच किया गया है. ओके, सो कोटिंग से सिंपलेस्ट है, दे आर फोटोकैथोड मेटालिक लेयर कोटेड विथ गोल्ड और सिल्वर, वेल एज मेटल बेस. एनोड जो है वो आयरन के साथ उसको बनाया गया है. सो इट इज नथिंग बट द आयरन. ओके, आयरन हम बोलते हैं, तो उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है. सो सिंपलेस्ट है कि आपके पास फोटो कैथोड है, आपके पास एनोड है, और आपके पास सेलेनियम लेयर है. बट द प्रॉब्लम अबाउट द सेलेनियम लेयर इज एंड सेमी कंडक्टिव. ये फुल कंडक्टिव नहीं है, सेमी मीन्स हाफ कंडक्टिव. बिकॉज ऑफ दैट वन वेन रेडिएशन, और सबसे पहली चीज़ जो है वर्किंग केस में जो रेडिएशन एक्सेस ऑफ रेडिएशन आ रही है, that excess of radiation first of all fall onto the selenium layer. So as we know, radiation जैसे इसके ऊपर fall हो गए, that selenium is an semiconductive, so पूरी की पूरी कंडक्ट नहीं कर पा रहे, तो उसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्लोली अकोमुलेशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो जैसे अकोमुलेशन हो जाएगा तो फोटो कैथोड फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्ब दैट इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन से फोटो इलेक्ट्रॉन्स. सो क्या करेगा, खुद की तरफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींच लेगा, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, देयर इज एन पोटेंशियल डिफरेंस टेक्स प्लेस बिटवीन फोटो कैथोड एंड एनोड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वन इनिशियली देयर इज अ नो डिफ्लेक्शन. इनिशियली वहां पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन इसके वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देने लगेगा. करंट फ्लोज कॉजेज डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, उससे आपको डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में मिलने लगेगा. ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस भी हमें पता होने चाहिए. व्हाट आर द एडवांटेजेस आर देयर? इट इज इकोनॉमिकल,
सबसे बढ़िया चीज़ है कि इकोनॉमिकल है, स्टिल इट इज़ कोटिंग होने की वजह से थोड़ा सा महंगा है ही, कॉमनली यूज्ड, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? सिंगल एम्प्लीफिकेशन, द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट शुड लो, एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस कैसा होता है? शुड लो, लेस रिस्पॉन्सिव अदर देन ब्लू रेड एंड स्लो रिस्पॉन्स, सो response is somewhat slow and a response is less for other like except the blue and red. आप अगर इन दोनों को छोड़ देंगे तो रिमेनिंग 5 कलर से उसके लिए इसका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो रहता है. So that is about the barrier layer cell. Then the next one regarding the turbidometry is the phototube, also called as the photo emission tube itself. अगर आपने देखा है तो इसके अंदर अगर आपने डायग्राम देखे तो हियर इज एन फोटो कैथोड, इनकमिंग बीम ऑफ लाइट, इसके ऊपर रेडिएशन गिरते हैं. ओके, सो व्हाट एवर द ट्यूब इज देयर दैट इज मेड अप ऑफ एन हैलो ग्लास ट्यूब, और उसके साइड में अगर हमने देखा है तो यहाँ पे आपको एनोड मिलेगी. ऐसी चीज़ यहाँ पे इस साइड पे आपको इनकम बीम ऑफ रेडिएशन मिलेगी, फोटो का थोड़ा यहाँ पे रहेगी, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एनोड मिलेगा. ठीक है. सो सिंपलेस्ट की सबसे पहले तो इट कंसिस्ट ऑफ हैलो वैक्यूम ग्लास ट्यूब. ये कैसी है? एक हैलो वैक्यूम, हैलो मीन्स व्हाट, अंदर से पोकल है पूरी की पूरी तरह. सो हैलो वैक्यूम ग्लास ट्यूब विथ फोटो कैथोड एंड अ कलेक्टर एनोड. ओके, so how the surface of the photocathode is there? Surface of photocathode is coated with the layer of element like cesium, potassium, SiO, or the mixture of these three. उनका combination भी कर सकते हैं. So simplest है कि radiation get fall, first of all light fall onto the photocathode. So electron produced flow toward the collector. उससे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए एंड फ्लो टूवर्ड द कलेक्टर. और कलेक्टर कौन है आपके इसमें? जो कलेक्ट करने वाला है, वी ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज द एनोड. सो टूवर्ड द एनोड एंड जनरेट अ करंट. सो जनरेट अ करंट मीन्स व्हाट? देयर इज एन इम्बैलेंस टेक्स प्लेस बिटवीन द फोटोकैथोड एंड द एनोड, एंड द अमाउंट ऑफ द करंट दैट गेट जनरेटेड, amount of the current that get generated is directly depends upon the amount of radiation that get fall onto the photocathodes. Okay, so it is also more sensitive. And next point is a widely used technique. इसको हम क्या करते हैं? widely use करते हैं. So this much is about the detectors of turbidometry. So these are the detectors. From detector the signals are getting, and that signals is go toward there is an instrument. It is not connected with the computer, simplest instrument is there. So where the amplification and readout or a small display is there, like if you are able to see the potentiometer or conductometer, like that there is an display is there where we take the reading. Same type of instrument is like this one, where we can display the reading. Okay, so this much is about the whatever the detectors are there. Now we are moving toward the applications of Nepheloturbidometry. So in the case of application, turbidometry and nephelometry can used on gaseous, liquid और इवन ट्रांसपेरेंट सॉलिड सैंपल्स. तो हम इसको लिक्विड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इवन वी आर यूजिंग फॉर द gaseous or even in the transparent solid samples also. Okay, so there are the some of the points that we have to be cover, or they are the some of the applications are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 till here is an 12 13 14 like this one, molecular weight of the 15 16 something are there, and the applications are there. So one by one we are going through the different applications. First one is the inorganic analysis. तो inorganic analysis के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. The important use of nephelometry as well as the turbidometry are the determination of sulfates.
हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फेट एज बेरियम सल्फेट, कार्बोनेट एज बेरियम कार्बोनेट, क्लोराइड in the AgCl silver chloride, fluoride in CaF2, cyanide in AgCN, calcium as oxalate. Okay, so there is a different use. So out of this, the sulfate determination in particular important and serves for the routine determination of total sulfate in coke. Okay, so we can identify the sulfate ion. Sulfate is important. Why? Because it is present in various important constituent beverages. Okay, that we are used for the drinks. So उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट रहता है, तो हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. तो रूटीन डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फेट इन कोक, कोल, ऑयल्स, इवन रबर्स एंड प्लास्टिक etc. सो उसके स्टडी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. अदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ नेफेलोमेट्री एंड टर्बिडोमेट्री इज टू डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हम कार्बन डाइऑक्साइड के स्टडी करने के लिए भी इसका यूज करते हैं. सो दिस वन इज एन इनऑर्गेनिक एनालिसिस. ओके, सो नाउ देयर इज एन ऑर्गेनिक और वी कैन से एनालिसिस. सो इन ऑर्गेनिक एनालिसिस we are studying the in food and beverages. So turbidometry is used for analysis of turbidity in sugar product. कितना टर्बिड है उसका एनालिसिस करने के लिए शुगर प्रोडक्ट का उसके लिए स्टडी किया जाता है. एंड क्लैरिटी ऑफ द सिट्रस जूस. हम जो जूसेस है कौन सा भी जूस ले सकते हैं आप, ठीक है, बिकॉज दे ऑल आर ऑर्गेनिक, प्लांट से बनते हैं और फ्रूट से बनते हैं. सो दे आर ऑर्गेनिक वन. सो उनकी क्लैरिटी के लिए उसमें अगर टर्बिडिटी है, कुछ इम्प्योरिटीज़ है, तो उसके स्टडी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. इवन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ बेंजीन. ओके, बेंजीन इन अल्कोहल बाय डाइल्यूटिंग विथ वाटर टू मेक इमिसिबल सस्पेंशन. ओके, अगर आपको बेंजीन डिटर्मिनेशन ऑफ बेंजीन करना है इन अल्कोहल बाय डाइल्यूटिंग विथ, because they are non-flowing solvent, and as we added the water into that one, so what going to happen, dilution water to make immiscible suspension. If alcohol and water are same, they can't be changed with each other, but when we added the benzene, अगर आप इसके अंदर बेंजीन रहेगा तो क्या हो जाएगा, there is an immiscible suspension lead to forms. Then देर इज एन बायोकेमिकल एनालिसिस. बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए भी इसका बहुत बढ़िया यूज़ है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टर्बिडोमेट्री इज टू मेजर द अमाउंट ऑफ, और सिंपली है कि हम क्या करते हैं, ग्रोथ ऑफ दैट बैक्टीरिया इन अ लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम. आपका अगर न्यूट्रिएंट व्हाट एवर द मेजरमेंट आपको किसकी करनी है, whatever the bacteria in a liquid nutrient medium. Okay, तो उसके अंदर कितने हो गए इसके स्टडी करने के लिए. ऑल्सो फाइंड आउट द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ अमीनो एसिड्स. अगर आपके पास, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं माइक्रोबियल एसे ऑफ अमीनो एसिड, विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स, वी आर यूजिंग फॉर दैट वन. देन इफ यू वांट टू डन द स्टैंडर्डाइजेशन, सो वी कैन डू द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड वैक्सीन्स. उसका स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. देन नेफेलोमेट्री हैज़ बीन यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, प्रोटीन के लिए, ईस्ट के लिए, ग्लाइकोजन एंड बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन इन ब्लड सीरम एंड प्लाज्मा. व्हाट वी आर डूइंग, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन के डिटर्मिनेशन के लिए ईस्ट, ग्लाइकोजन एंड बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन, बीटा और गामा ग्लोबुलिन इन ब्लड सीरम एंड प्लाज्मा. उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. देन एनालिसिस ऑफ वाटर. सो वी आर नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर आर देयर, सीवेज वाटर, टर्बिड, what we are using the bore, so उसका वाटर, उसकी हार्डनेस ज़्यादा रहती है. ओके, इवन द प्लांट है, प्लांट के ऊपर से मीन्स जो वेस्ट आता है, दैट इज अनदर काइंड ऑफ वाटर्स. सो टर्बिडोमेट्री एंड नेफेलोमेट्री आर यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए और सीवेज वाटर के लिए. सो यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर. तो आपके पास अगर ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी है,
और उसके अंदर अगर कुछ भी पार्टिकल्स है, इवन यू कैन एबल टू सी दैट कैन बी एनालिसिस बाय टर्बिडोमेट्री और टर्बिडिटी. ओके, सो टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर्स, इवन थोड़ा सा भी अगर पार्टिकल्स रहे सलाइन वाटर के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. देन सरफेस वाटर एज वेल एज डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, सरफेस वाटर के लिए भी हम यूज़ करते हैं एज वेल एज डोमेस्टिक, लाइक हम जो नल आता है उसकी स्टडी भी कर सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आ रहा है तो उसके अंदर कितने अमाउंट का प्लूटेंट है. हमें पता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले स्टरलाइज करना पड़ता है, उसके पोल्यूटेंट रिमूव करने पड़ते हैं और तब हमें जाके छोड़ना पड़ता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी करती नहीं, तो उसके स्टडी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. ओके, इवन यूज टू कन्फर्म द हार्डनेस ऑफ वाटर, अगर उसका TDS वगैरह वो भी कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, हार्डनेस कैलकुलेट, और उसके TDS कैलकुलेट करने के लिए भी हम इसी का यूज़ करते हैं. ठीक है. देन देयर इज अ टर्बिडोमेट्रिक टाइट्रेशन. सो इन दिस टाइट्रेशन वी कैरी इट आउट इन अ मैनर और एनालॉगस टू फोटोमेट्रिक टाइट्रेशन. फोटोमेट्रिक हमने जो किए हैं. ओके, सो इन दिस टाइट्रेशन द ऑब्जर्वेंस इज टू प्लॉट अगेंस्ट द वैल्यूम ऑफ टाइट्रिन एडेड. हम एक जगह पे x observance, y axis there is a volume of titrin added. So with the increase in the volume of titrin, जैसे हम टाइट्रिन का वैल्यूम बढ़ाते जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रिसिपिटेट इंक्रीजेस. तो जैसे जैसे सब्सटेंस गिरते रहेगा तो अपने आप वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रिसिपिटेट गेट इंक्रीज, एंड जैसे प्रिसिपिटेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा हम जो रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन भी उसका बढ़ते जाएगा. व्हेन ऑल द सब्सटेंस गेट प्रिसिपिटेटेड, जब उसके अंदर सभी के सभी सब्सटेंस प्रिसिपिटेट हो गए, द एब्जॉर्बेंस बिकम्स द कांस्टेंट. तो उसके बाद फर्दर एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएंगे. सो दैट थिंग इन द केस ऑफ टर्बिडिक एनालिसिस. डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाई पॉलीमर्स, हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन. सो हाई पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज किया जाता है. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, turbidity is measured at different concentration of the solution in a suitable medium. उसका मेजर करने के लिए turbidity का हम इसका यूज करते हैं. Then we can study atmospheric pollutions. Atmospheric means what, बाहर की हवा है. अब हमने तो वाटर प्लांट से वाटर को हमने स्टडी कर लिया, ठीक है, उसको हमने फिल्टर करने की भी कोशिश की, सब कुछ कर लिया. लेकिन अब एटमॉस्फेयर, वही इंडस्ट्री क्या करेगी, एटमॉस्फेयर में भी एयर सेंड करेगी. तो स्मोक एंड फॉग आर द विजिबल लार्जली ड्यू टू द लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट. हमें क्या धोखा दिखता है, और वो जो पोल्यूशन की वजह से हमें वाइट वाइट कलर दिखने लगता है, स्मोक दिखने लगता है, फॉग्स आर देयर आर विजिबल लार्जली ड्यू टू द लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट्स. ये हमें दिखती है क्योंकि इसका लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट की वजह से. दस दिस इफेक्ट्स आर यूजफुल, ये जो इफेक्ट है ये यूजफुल है, आर यूजफुल इन द मॉनिटरिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. आपका जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है उसको मॉनिटर करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं. सो एटमॉस्फेयर मीन्स व्हाट, एज अ रोल ऑफ चिमनी इन द इंडस्ट्रीज दैट वी आर यूजिंग. कितने पोल्यूटेंट आ रहे हैं, कैसे पोल्यूटेंट है, बाहर के एयर अच्छी है कि नहीं, ये एवरीथिंग दैट वी आर स्टडिंग, इवन एयर एंड वाटर पोल्यूशंस. So in the case of this one, air and water pollution, turbidity and nephelometry are used for continuous monitoring of air and water pollution. इनका रोल ही क्या है कि एयर और वाटर पोल्यूशन है जो उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने का काम इनके पास आता है. इन ईयर अगर हमें एयर इनप्योर लग रही है, क्यों, समटाइम द इन ईयर डस्ट एंड स्मोक्स आर एवॉर्ड विद दैट वन. सो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए मॉनिटर्ड, वेयर एज इन वाटर turbidity is monitored or turbidity is using for that one to take the or to done the monitoring. Then in the case of this one there is a drug development and drug solubility. तो कभी कभी क्या होता है, अब ये जो कंसेप्ट है ड्रग सॉल्युबिलिटी, वी आर टेकिंग द पर्टिकुलर सब्सटेंस, वी एड इनटू पर्टिकुलर सॉल्यूशन और वी आर थिंकिंग दैट कलरलेस दिख रहा है तो यस इट इज गेट सॉल्युबलाइज. पर क्या होता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी 100% हुई कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वही सॉल्यूशन जो कंप्लीटली सॉल्युबलाइज है हम सीधे सैंपल एनालिसिस सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं, रेडिएशन पास करते हैं. तो हमें क्या होता है कि क्लियर दिख रहा है हमारे आंखों को, लेकिन वहाँ पे हमें रीडिंग दिखने लगती है. क्यों, बिकॉज इट कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आइज बट इट कैन बी आइडेंटिफाई by the use of this instrument. So even the initial stage of drug development nephelometry help in detecting the turbidity which can not seen by naked eyes. वो हमें naked eyes से दिखते नहीं, इसके लिए इसके भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है. and drug solubility can be done. हम क्या कर सकते हैं, drug solubility है
तो हम इंस्ट्रूमेंट से देख के कर सकते हैं कोई पीक मिल रहा है कि क्या मिल रहा है, लेकिन इससे हट के हमने अगर नेफ्लोटोमेट्री इज 100 टाइम्स मोर फास्टर देन एचपीएलसी विच कैन गिव द मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स. देन क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, it is used to determine the level of serum in immunoglobulins. So हमें क्या करना है, इम्यूनोग्लोबुलिन हमें स्टडी करना है. सो यूज टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबिन, स्पेशली द आईजीए, आईजीजी, आईजीएम एंटीबॉडीज आर देयर. सो उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज करते हैं. ओके, देन द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स लाइक C3, C4, C3. Okay, there is a C8 also there. So there is a C3D are there. So factors are determined by nephelometry. Okay, so even blood clottings are there. There the various factors are there which are responsible. So we can also study that one. Then acute phase reactant. ठीक है, acute phase reactant proteins like hematoglobin, serosplasmin or ceruloplasmin, then rheumatoids. Factors in serum plasma can be quantitatively determined by nepheloturbidometric assay. ठीक है, तो हेमोग्लोबिन, सेरुलोप्लाज्म, रिमोटॉइड्स फैक्टर्स इन द सीरम, सीरम के अंदर ये जो फैक्टर है, एंड प्लांट कैन बी quantitatively determined by the nepheloturbidometry assay. Then there are the another applications are there which we are using, like determination of impurities and particulate matters in pharmaceutical aerosols. So we can study the determination of impurities and especially particular matters in pharmaceuticals like aerosols के अंदर अगर कुछ impurities है, injection के अंदर कुछ impurities है, suspension and other liquid preparation. ठीक है, determination of endpoint in precipitation reactions using chemical indicator. हम उसका chemical indicator यूज करके determination of endpoint कर सकते हैं. Used in power and steam generation, हम इसका यूज पावर एंड स्ट्रीम जनरेशन प्लांट, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, अगर आपके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट है तो उसके रिफाइनरीज प्रॉपरली हो रही कि नहीं, क्लीन हो रहा है कि नहीं, फिल्टर हो रहा है कि नहीं, उसका स्टडी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज, आपका जो पल्प है इसके अंदर भी आपको डिजोल्व करना पड़ता है पर्टिकुलर सोल्यूशंस टाइटनिंग प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये बराबर है कि नहीं, इसका भी स्टडी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. इवन इन द केस ऑफ बॉटलिंग इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज एन पुलिंग, टिप सीलिंग, ऑल थिंग्स आर डन, सो that we can, there is an use of this one. So paper, वहाँ पे बॉटलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि कांच है, तो कांच का यूज़ कैसे होगा हमारे इसमें, तो क्योंकि कांच भी हमें ट्रांसपेरेंट है, सॉलिड है, तो अगर उसके अंदर कुछ मिक्स होगा ना तो भी इसका इनप्रॉपर रिजल्ट आएगा. एंड फॉर दैट वन वी कैन स्टडी नेफ्लोमेट्री इज यूज इन द केस ऑफ बॉटलिंग इंडस्ट्री. देन एनालिसिस ऑफ गैस, लिक्विड, ट्रांसपेरेंट, सॉलिड फॉर पर्टिकुलर मैटर्स. तो हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड ट्रांसपेरेंट सॉलिड फॉर पर्टिकुलर मैटर. डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाउड पॉइंट इन सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, क्लाउड पॉइंट के इसलिए भी हम इसका यूज किया जाता है. इवन इन द डिटर्जेंट इंडस्ट्री वी आर आल्सो यूज टू दैट वन. ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आई मस्ट से, फॉर द पेशेंस लिसनिंग. Okay, so I think we are finished with this chapter. Hope you getting this one is in somewhat smaller chapters. In the next lecture we are discussing on atomic emission and atomic absorption spectroscopy, which are quite a larger chapter than this one. I hope you are getting that point too. So we thank you for your patient listening and understanding the all of the concepts. So wish you a very happy learning. Stay safe. Thank you very much.